Welcome to all of you once again in this session. So far, we have done two experiments in term 2 electricity chapter. First, to verify the Ohm's law, means dependence of potential difference on current passing through a resistor, and to find the resistance. And second experiment, we have done that to find the equivalent resistance of two resistors when connected in series. तो आज हम जो करने जा रहे हैं that is third experiment which is very important for term 2 exam to find the equivalent resistance of two resistors connected in parallel. And I'm sure that you will enjoy this experiment, you will learn, and you will be able to do this experiment in your lab also. Now let's start the session. Yes, dear students, welcome to all of you in this session. And in the session of practical. So here in this session, we are going to do the third experiment to determine the equivalent resistance of two resistors when connected in parallel. Before this, in electricity chapter, we have done how many experiments? Two experiments. Number one experiment, we have done a verification of Ohm's law, or we can say that to determine the dependence of potential difference across a resistor when current is passing through it, and to find the resistance of the wire. Okay, resistance of the resistor. Resistor हमने जो use किया था उसमें that was a nichrome wire. And after that we performed the experiment to find the equivalent resistance of two resistors when connected in series. So today we are going to find out the equivalent resistance of two resistors when connected in parallel. So this is the third experiment. And you know, experiments are very, very important because when you are studying physics, you know, when we do experiments, we learn more. So learning by doing is more. And these experiments are very, very important in term to exam also, because question based on these experiments will be asked in exams. Okay, and when you perform the experiment, so first of all, you have to write down the aim of the experiment in the notebook. And aim, heading आप हमेशा लिखेंगे, aim का लिखेंगे या material required, इसमें जो भी heading आएंगे, these should be in black color. Rest you will be writing in blue color, right? Because presentation of work is very, very important. आपका presentation अच्छा होगा, तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा और खुद को भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? एंड इसमें क्या क्या हम मटेरियल रिक्वायर्ड हमारे को है, क्यों है, वी शैल बी स्टडिंग. एंड अबव ऑल यू विल फाइंड दैट हाउ टू कनेक्ट द वेरियस अप्लायंसेस इन दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, सो हाउ कैन यू लर्न द एक्सपेरिमेंट सिटिंग एट होम एंड कैन गेट द नॉलेज. So here, first of all, you have to write down the aim. So aim you can see here, to determine the equivalent resistance of two resistors connected in parallel. So here two resistors are connected in parallel. How to connect them in parallel? अब इसको diagram में बनाएंगे. तो जो diagram है, diagram should be done on the left side page, which is plain paper, plain side, right? After that we have to write down the material required. So material required में क्या लिखेंगे? Number one, connecting wires. So these connecting wires are insulated copper wires. Okay. And second is battery eliminator. So here in this experiment, I have used battery eliminator. And you know what is the role of battery eliminator? वो इसमें experiment में बताया गया है. Battery eliminator क्या करता है? Eliminate. What is eliminator? So it eliminate extra voltage. मीन्स हम जो बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट करते हैं, दैट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई. एंड बैटरी एलिमिनेटर कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ओके, इसमें आप देखेंगे जो बैटरी एलिमिनेटर है 2 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हमको इलेक्ट्रिक करंट देता है. ओके, तो एक्स्ट्रा करंट जो है अबव 12 वोल्ट इट इज एलिमिनेटेड, रिमूव्ड. ठीक है, कन्वर्ट कर देता है हाई को लो में. तो एक तो काम करता है, इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. दूसरा क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी. एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. ठीक है,
उसके बाद हम यूज करेंगे डीसी वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखेंगे डीसी वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट वोल्ट मीटर जो है वर्क कर रहा है डायरेक्ट करंट पर। क्यों? बिकॉज एसी is being converted to DC. In the circuit, we are using direct current, है ना? Because बैटरी एलिमिनेटर ने AC को DC में कन्वर्ट कर दिया है। सेकेंड हम यूज करेंगे DC ammeter to measure the magnitude of current in the circuit. Voltmeter to measure the potential difference across the resistors. उसके बाद में हम यूज करते हैं रिहोस्टेट। तो रिहोस्टेट का फंक्शन वी हैव डिस्कस्ड इन अ सेशन। तो रिहोस्टेट में जब स्लाइडर को हम मूव करते हैं तो इससे क्या चेंज होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चेंज होगा, है ना? तो क्या चेंज होगा? करंट चेंज होगा, ठीक। एंड आफ्टर दैट वी यूज टू नॉन रेजिस्टर्स। हम इसमें जो एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं जिनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे टू नॉन रेजिस्टर्स। और इसमें जो हमने दो रेजिस्टर्स यूज किए हैं वो है हमारे 2 ओम का है एक, एंड दूसरा है हमारा 5 ओम। वी हैव यूज्ड हियर 2 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम एंड 5 ओम, और इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एम एंड देन मटेरियल रिक्वायर्ड। यस, and you are asked this question in exams ki why DC voltmeter is used, why DC ammeter is used, okay, what is battery emitter, connecting wires, these should be of which kind? So these are insulated copper wires, insulated copper wires, ठीक है। इन लैम्प जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है उसका कलर देखो व्हाइट होता है, कॉपर वायर के ऊपर व्हाइट कलर का थ्रेड लगा होता है, ठीक है। यस, तो आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन द थ्योरी। तो इसको नोट करिए फिर नेक्स्ट पॉइंट। So after material required, we have to write down theory. Theory is very, very important. Theory or principle. In some experiment we write principle, and in some experiment we write theory. So it is very, very important because it helps us to understand the experiment. So here इसमें theory क्या है? 2 resistors are in parallel. If one end of each resistor is connected to one common point, and other end of each resistor is connected to another common point. ठीक है, ये इसको हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे। When they are connected in this way, then in such a case, potential difference across each resistor remains same. As it happens at home, घर में आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, they are connected in parallel. And the potential difference, means voltage जो हमारे घर में आ रही है ना, तो that is same across each appliance. हर एक अप्लायंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा? 220 वोल्ट घर पे रहता है ना। तो सेम थिंग हैपेंस हियर। एंड इफ R1 and R2 are the 2 resistors in parallel combination, अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, है ना? व्हाट इज द फार्मूला? दिस वी हैव डन इन थ्योरी सेक्शन आल्सो, फिर भी लिख देते हैं। तो हमारे 2 रजिस्टर है, तो 2 रजिस्टर जब होते हैं तो सिंपली वी कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा Rp। तो P मींस पैरेलल, तो Rp मींस इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दो के लिए दिस फार्मूला जो है it helps only when 2 resistors are there. So simply we can write down R1 into R2 upon R1 plus R2. So this way, using this formula, हमारे चाहे थ्योरी में क्वेश्चंस आए, अगर 2 रेजिस्टर्स की बात हो रही है, तो we can use simply this formula to calculate the equivalent resistance. इसके लिए हमें इस फार्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम, इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। सो व्हेनेवर वी आर गिवन 2 रेजिस्टर्स वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, सो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे डायग्राम की। व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? क्या होगा, ठीक? तो इसको थ्योरी को नोट कर लें, और ये फार्मूला इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
So after theory, circuit diagram is very very important. So how circuit diagram is made and how appliances are connected in circuit. So देखिए two resistor, we are talking about the two resistors R1 and R2. So एक हमारा resistor R1 है, तो देखिए हमारा resistor पहला हमारा जो diagram होगा, so that is like this. So this is the resistor R1 here, and this is the resistor R2. So now these two resistors are there. This is R1 and this is R2. अब देखिए इनको पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना है. अभी हमने बोला था कि वन एंड ऑफ ईच इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट. तो यहां पर हमारा कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है. एंड अनदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट. तो दूसरा कॉमन पॉइंट हमने यहां ले लिया, ठीक है. तो देखिए ये जो रजिस्टर है इसको हम ऐसे वायर से कनेक्ट कर देंगे और ये इधर हो गया. सेम वे दिस ओके, ये ऐसे हो जाएगा. सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और फिर इनको हम सर्किट में ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है. इधर से करंट आया एंड इट गोस टू दिस साइड एंड इट गोस टू दिस साइड एंड दिस इज द अनदर वायर. So this way two resistors R1 and R2 have been connected in parallel. So you can see current I which is coming to this circuit is divided into two parts. ये I1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा I2. So this is parallel combination of two resistors. Now circuit diagram. तो सर्किट डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, है ना, बैटरी एलिमिनेटर. तो हम शुरू करते हैं बैटरी एलिमिनेटर से. ये देखिए हमारा हो गया बैटरी हो गया, और वी कैन से इट इज बैटरी एलिमिनेटर. ये एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. तो बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट करेंगे किससे, हम अमीटर से. तो यहां से हमने ये हुआ एंड हियर इट इज कनेक्टेड टू ammeter and it is positive. तो पॉजिटिव ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ ammeter. ओके, एंड आफ्टर दैट देखिए ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आया हमारा. ये सर्किट चल रहा है हमारा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव टू शो इन द डायग्राम. तो अब इसके बाद में हमारे देखिए ये करंट आया हमारा ऐसे. यस, नाउ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड हियर. ओके, रेजिस्टर्स को हम यहां पर लगाएंगे. तो एक हमारा रेजिस्टर देखिए ये आएगा एंड सेकंड रेजिस्टर इज दिस. तो हियर इट इज R1 सेम एंड हियर इट इज R2. यस, तो अमीटर हो गया. वोल्टमीटर कैसे लगाएंगे, तो वोल्टमीटर लगेगा इसके दोनों एंड, ठीक है. तो ये पैरेलल में रहेंगे. तो देखिए ये हमारा हुआ एंड आफ्टर दैट ये आएगा यहां पर ये, एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड हियर. दिस इज वोल्टमीटर. यस, तो हियर इट इज वोल्टमीटर. ये देखिए ये नेगेटिव है, तो दिस इज नेगेटिव, तो इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ ammeter, वोल्टमीटर, एंड देन दिस इज नेगेटिव. So here remember we are using DC ammeter and DC voltmeter. Okay. After that, what is missing here? ये हमारा connecting wires हो गया. Rheostat is missing and key switch on off का. तो यहाँ पर हमने on off का switch लगा दिया. This is switch. And then we have to connect it to the rheostat. Rheostat भी अभी हमको लगाना है. So देखिए ये हो गया पूरा. इसके बाद this, yes, okay. So here it is rheostat. ये हो गया rheostat, ये की हो गया. तो now you have to label it also. तो इसको लेबल कर देंगे. तो ये हो गया हमारा बैटरी एलिमिनेटर. दिस इज बैटरी एलिमिनेटर जो हमने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है. ओके, दिस इज ammeter and this is
voltmeter, resistance R1, resistor R2, and here it is switch, and this is rheostat. So this way our circuit diagram is completed. So in the same way appliances have been connected in the experiment. Okay. So now, any doubt here? So remember positive, negative, you have to show in the circuit diagram also to get the good marks. So in exam this question can be asked. इसकी जगह आपको ammeter दे सकते हैं, ये voltmeter दे सकते हैं, terminals change कर सकते हैं. Then you can be asked that how correct diagram can be drawn. What is the mistake in the diagram and redraw the circuit diagram. Okay. Any problem here? So note down this. So now we are going to perform the experiment. The experiment करेंगे और उसके बाद में हम बनाएंगे observation table. Observation table you will find it is in the experiment itself. उसी में observation table बनाकर हमने value इसकी जो readings आई उनको लिखा हुआ है. So now let's perform the experiment. ध्यान से देखिए and try to understand. For starting the experiment, we should know how to join the various devices and electric circuits. So this is the battery emitter. First, it is connected to this power supply. This is AC power supply, and here you know what is the voltage here. It is 220 volt, very high voltage. Now it is connected to battery emitter, and role of battery emitter we know. Okay, it has two functions: convert high voltage into low voltage. Second, okay, AC into DC. Alternate current is converted into direct current here, right? So AC is switched on, and here we get the DC supply. It is written here DC, right? So this is positive terminal connected to the insulated copper wire. This insulated copper wire is connected to this way. Okay, here ammeter positive terminal. Then it is negative terminal. Insulated copper wire is connected to this, right? We are going to find out the equivalent resistance of two resistors connected in parallel. So I have here two resistors, 2 ohm resistor. This is 2 ohm, and this is 5 ohm resistor. These are connected with the insulated copper wires. Here you can see these are two terminals connected with the insulated copper wire. So, and this is a setup as earlier we have discussed in series combination. Now I am going to join these two resistors across voltmeter here. So one is connected here, and same way this is the second resistor 5 ohm. This one wire is connected to this terminal here. Okay, and now these two are connected to. Here you can see in parallel combination these two resistors are opposite to each other, and at the center voltmeter is there. Okay, so these two terminals are connected to this positive terminal, and these two wires are connected to this negative terminal. Okay, so these are in parallel. So current is being distributed here. Okay, so some current is going to this 2 ohm resistor, some is going to 5 ohm. While in series, only one path is there for the flow of electric current. Right. Now we are going to start the experiment. Please count and the range. That is also very, very important. So range of the ammeter here, which we are using is 0 to 3 because it is 3 here, and here same way range of this voltmeter is 0 to 3. Now when we have to find the least count, here how to find least count? This I am going to tell you. It is 0 here, and here it is 1. After that 0, okay, 1 is there, and between 0 and 1, 0.5 is there. So either we can take 0 to 0.5, so 0.5 minus 0, it will be 0.5, and number of divisions if we count between 0 to 0.5 are 10. So 10 divisions are there between 0 to 0.5. Same way here. So 0.5 is divided by 10, so least count comes out to be 0.05 ampere. So one division will count 0.05 ampere current. Same way one division will count 0.05 volt. Okay, potential difference here, right? Now, after this, I am going to switch it on. Battery, it is switched on, and here these two are in parallel. Again, I am just reminding you, these two are in parallel. So what we have to see here,
So this here ammeter needle is on 5 and it is on 6th division. I can just bring it to 6 here. It is with the help of slider. Yes, it is on 6th division. So here I am writing 6 into 0.05 because 0.05, as we have discussed earlier, it is a least count. Okay, and now let's see voltmeter reading. Needle is on it is on 9th division. Yes, so here it is 9 into 0.05 and resistance is comes out to be 9 into 0.05 upon this is 6 into 0.05 and here cancel 3 3 is a 9, 3 2 is a 6 and it comes out to be 1.5 ohm. Right? Now second reading we have to take, just I am moving it and now slider is coming to next. Okay, slider is changing its position and needle is now on 5, 6, 7th division. Ammeter needle is on 7th division. So I am writing here 7 into 0.05 least count and voltmeter reading here you can see needle is on 10th division. Okay, so it will be 10 into 0.05. So resistance will be 10 into 0.05 upon 7 into 0.05 cancel and 10 upon 7 means 1.4 ohm. Yes, and 1.4 and 1.5, these two values are less than 2 ohm, which is the smallest here resistor which is being used. Now third reading, again we have to move the slider. By changing the position of slider, I am bringing it to the, now it can, you can see it is on 8th division. Ammeter needle is on 8th division and here it is on, after 10 it is on 11. Right, now I am going to switch it off. It is on 8 and it is on 11. So 11 into 0.05 and these values are, this is in volt and this is in ampere. Okay, this is in ampere, ampere, ampere and these values are in volt. Right, and here R it will be 11 into 0.05 upon 8 into 0.05 cancel 11 upon 8 means 1 point here 3 1.3 ohm. So 1.5 1.4 1.3. Now we have to get the mean resistance. Here mean will give, here mean, how to find mean resistance here, it is R is equal to 1.5 plus 1.4 plus 1.3 divided by 3. So here R it comes out to be 5 plus 4 9 3 12 1 2 3 4 upon 3 and it is 1.4 ohm. So here equivalent resistance of two resistors connected in parallel. Two resistors are 2 ohm and 5 ohm. Their equivalent resistance it comes out to be 1.4, which is less than the smallest resistor. Here it is of 2 ohm. Okay, so this way this experiment is proved. That's. Now we have done the experiment. Now after experiment, observation आपने उसमें पेपर पर देख लिया, तो same observation table you have to make in your notebook. Now we are going to do verification कि our result is correct or not. तो verification heading डालेंगे और इसमें देखिए आपने जो resistor R1 यूज किया था, this is of 2 ohm and R2 is of 5 ohm. So first of all we have to find out the theoretical value of R1 and R2. जो R1 and R2 जो resistor है इनका theoretical value find करेंगे. तो हम लिखेंगे theoretical value of RP. RP means equivalent resistance here. तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग फार्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, तो देखिए RP की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 2 into 5, यहाँ लिखेंगे 2 into 5
upon 2 plus 5, it will be 10 upon 7. 10 upon 7 and RP का वैल्यू 10 upon 7 करेंगे तो कितना आता है? देखिए डिवाइड करिए इसको. It is approx 1.42 ohm. इसका जो वैल्यू आता है दिस इज 1.42 ohm. तो दिस इज अ theoretical value of equivalent resistance. अब इसके बाद में हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट वैल्यू कितना आया है इसका. देखिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका वैल्यू कितना आया. नाउ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आरपी. तो यहां पे देखिए ये जो हमने वैल्यू निकाला है आरपी का एक्सपेरिमेंट से, तो दैट इज हाउ मच, कितना वैल्यू निकाला था आपने? सो जो एक्सपेरिमेंट में वैल्यू हमने फाइंड किया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, दैट इज आल्सो 1.4 ohm. Okay, so you can see here this is theoretical value 1.42 and this is experimental value 1.4 here. So both values are equal. Both values are equal. So this means हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो एकदम ठीक हुआ है ना. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस you can see here it is less than smallest resistance used in the circuit, that is 2. तो 1.4 जो है ये 2 से लेस है. And we know in parallel combination equivalent resistance जो होता है that is always smaller than the smallest resistance used in the circuit, right? तो इसका ना हमारा एक्सपेरिमेंट एकदम ठीक आया है. After that what we have to find out? We have to write down result. After that we have to write down the result. तो इसको नोट कर लीजिए. So in result we write down the experimental value and theoretical values of equivalent resistance are same in the experiment here. So R1 and R2 हमारे दो resistors थे, उनका resistance 21 ohm and 5 ohm है. And इनका देखिए हमने theoretical value and experimental value find किया, दोनों हमारा same है. So this means we have proved our experiment. We have got the equivalent resistance of two resistors. At last we have to write down precautions. So precautions are very very important. कोई भी काम करने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं ना. तो क्या precautions लेंगे, क्या सावधानियां रखेंगे, अब उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. And in exam you can be asked to write any two precautions for 1 mark. So now let's write the precautions. So now precaution, first precaution is the connection should be tight and clear. अगर कनेक्शन हमारे टाइट नहीं होंगे, क्लियर मींस एंड उसका जो है वो अच्छी तरह से कनेक्ट होना चाहिए. एंड देयर शुड नॉट बी डिसकनेक्शन, कहीं भी ऐसा ना हो कि वो आपस में कनेक्टेड ना हो. एंड दे शुड बी अप्लायंसेस शुड बी कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम. ठीक है. नहीं तो क्या होगा, करंट आपका रीडिंग जो है ठीक नहीं आएगा, करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा. समटाइम व्हाट हैपेंस व्हेन करेक्शंस आर नॉट करेक्ट, तो उसमें क्या है, जो वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आएगा करंट का, तो दैट इज नॉट गोइंग टू पॉजिटिव साइड, इट इज गोइंग टू नेगेटिव साइड, है ना. वो रीडिंग देता ही नहीं है आपको. सेकंड, टेक द वोल्टमीटर और अमीटर ऑफ प्रॉपर रेंज. ये रेंज बहुत जरूरी है ना, कि आप क्या रेंज का वोल्टमीटर और अमीटर ले रहे हैं. तो रेंज कैन बी 0 to 3 एम्पियर इन अमीटर और इट कैन बी 0 to 3 वोल्ट इन वोल्टमीटर. तो इतनी रेंज के हमारे पास मीटर एंड वोल्टमीटर एनफ रहते हैं. द करंट शुड नॉट बी अलाउड फॉर लॉन्ग टाइम. तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन. दिस वी हैव डन इन ओम्स लॉ आल्सो, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए करंट पास क्या होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. So we should not allow the resistance to increase. So after every reading current should be switched off. Now ammeter and voltmeter should be free from zero error. तो जीरो एरर का मतलब क्या है कि जब हम ammeter और voltmeter को यूज कर रहे हैं, this is 0 here, this is 1, this is 2 and this is 3 here. तो जो हमारा needle है it should be at 0 here. जो हमारा निडल है ये हमारा 0 पर होना चाहिए. जब हम सर्किट में इसको यूज नहीं कर रहे हैं, सर्किट क्लोज्ड नहीं है,
तब भी जो है निडल जो है वो 0 पर होना चाहिए, वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों में। अगर निडल 0 से राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है तो यू विल नॉट गेट द करेक्ट रीडिंग और फिर आपको 0 एरर को रिमूव करना पड़ता है। सो कोशिश करेंगे हम कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों ही हमारे 0 एरर से फ्री होने चाहिए, उनमें 0 एरर नहीं होना चाहिए। मींस पॉइंटर जो है या निडल है इट शुड बी एट 0. Okay, I'm sure you must have enjoyed the session today and you will be able to do the experiment in lab also if you get the opportunity. तो नहीं तो हमने आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से समझाई दिया है and I'm sure you are going to get good marks along with the knowledge. So thanks to all of you.